दिलों में बेदाग वफाएं, सागर के दिल में जितने खजाने, दिल के सागर में उतने फसाने। आतिश अंगारे, शोरों के धारे, रंगीन शरारे, बारिश के तारे। हेलो दोस्तों, व्हाट्स अप लवली पीपल। अभी हो रही है बारिश और मैं ले रहा हूँ राइड का मजा। आई एम ऑन ओल्ड मुंबई कोलकाता हाईवे राइट नाउ। हाईवे जो है ये कोलकाता तक जाती है। अराउंड एंड ऑफ दिस मंथ मैं घर जा रहा हूँ, ताकि भुवनेश्वर जा रहा हूँ। तो तब मैं एक वीडियो बनाऊँगा फ्रॉम रायपुर टू भुवनेश्वर। इट इज़ अराउंड 500 to 600 किलोमीटर्स। मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा जो यहाँ से भुवनेश्वर या उड़ीसा कोलकाता जाना चाहते हैं, कहाँ चेक गेट्स है, कहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, नहीं हो सकती है, एंड प्रॉपर रास्ता है दो। एक जगह पे आके आपको ये हाईवे छोड़नी पड़ती है। अगर उस हाईवे कंटिन्यू करेंगे कोलकाता के लिए, इट्स वेरी 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 बैड रोड। मतलब once I had gone on that road and it took me around 5 hours to cover 100 kilometers only। तो मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा, स्पेशली जो भुवनेश्वर जाना चाहता है वहाँ तक की रास्ता एकदम एग्जैक्ट बताऊंगा, कहाँ पे कैसे जाना है और कौन सा टर्न्स लेना है, कब निकलना होता है, कहाँ चेक गेट्स आएंगे। बिकॉज ऑफ अभी जो चल रही है लॉकडाउन की वजह से एंट्री, स्टेट एंट्री थोड़ी मुश्किल हो रही है अभी। इसी स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रैवल करना है बेसिकली। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो, इट विल बी कमिंग सून। Let's go! जगह बहुत खूबसूरत लग रही है, तो सोचा कि यहाँ पे रुक के एक दो फोटोज निकाल लेते हैं फॉर इंस्टाग्राम।